मैं ये कहना मांगता हूँ कि ये जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं उसके लिए देयर इज़ एलिमेंट ऑफ लक। इसका एक ही तरीका था कि बजाय इतना ऊंचाई पर चलाने के हवाई जहाज़ को मैं डेक लेवल में जाता। कैमराज विच वे यूज्ड फिर टेलीफोटो कैमराज और उनकी इतनी दे वर सच हाई क्लास कैमराज कि अगर आप 40,000 फुट के ऊपर हो और वहाँ से तस्वीर खींचो टेलीफोटो कैमरा, विल पिक अप ए कार एंड द नंबर प्लेट यू कुड रीड। 1 सितंबर से मुझे मिला एंड बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द आई वाज द फर्स्ट पर्सन फॉर हैविंग गॉट द फर्स्ट एमबीसी, वो जो सेकंड मिला तो आई बिकेम द फर्स्ट वन विद द डबल महावीर चक्र एज वेल। इस हाइट से तो आदमी की शक्ल भी नज़र आ जाती है, तो उनके सोल्जर्स मेरे ऊपर फायर करते थे अपनी राइफल वगैरह से। वी द सोल्जर्स, रणांगणावर शूरगाथा गाजवणाऱ्या जवानांवर आधारित माहितीपटात मी मिलिंद गवळी या कार्यक्रमाचा अँकर आपलं सहर्ष स्वागत करतो। मंडळी, आपण आपल्या घरी सुखाने शांतपणे झोपू शकतो, त्याचं कारण आहे कारण जवान सीमेवर अहोरात्र 24 तास पहारा देत असतो आणि त्याचं हे कर्तव्य बजावत असताना त्याच्या मनामध्ये कोणाविषयी कधीही तक्रार नसते, कारण त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या रक्तात सळसळत आहे आपल्या भारत मातेसाठी वीरगती प्राप्त झालेल्यांची प्रेरणा। कारण आपलं हे कर्तव्य आपण कधी काळी भारत मातेसाठी बजावल्याची जाणीव त्याला असल्याने तिच्याच रक्षणाचे सदैव विचार त्याच्या मनामध्ये असतात। कधी काळी एका कुटुंबात जन्माला आलेल्या त्या कुटुंबाचाच भाग न राहता आपल्या जन्मभूमीला आपली कर्मभूमी मानत या देशासाठी शहीद होण्याची उर्मी त्याच्या मनामध्ये असते, कारण त्यांनी त्याच्या श्वासातला प्रत्येक क्षण आणि रक्तातला प्रत्येक थेंब या मातृभूमीसाठी अर्पण केलेला आहे। आपल्या सेना दलाचे कर्मचारी डोळ्यात तेल घालून अहोरात्र सीमेवर पहारा करून देशाचं रक्षण करतात। लष्कर, नौदल, वायुदल यांचे जवान मोठ्या धैर्याने शत्रूचा सामना करतात। त्यांचं बलिदान, त्यांचा त्याग, त्यांच्या निधड्या छातीचं वर्णन करावं तेवढं कमी आहे। रणांगणात आणि रणांगणाबाहेर मर्दुमकी गाजवणाऱ्या सगळ्या जवानांचं आपलं भारतीय सरकार शौर्य पदकाने त्यांचा सन्मान करतं। आपलं सर्वस्व पणाला लावून या देशाचं रक्षण करणाऱ्या जवान अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ती चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल आणि युद्ध सेवा मेडल अशी पदके देऊन सन्मान केला जातो। दोनदा महावीर चक्र मिळवण्याचा दुर्मिळ विक्रम करणारे भारतीय हवाई दलाचे बहादूर अधिकारी विंग कमांडर जगमोहन नाथ आपल्या बरोबर आहेत। The first award, highest award is the Paramveer Chakra. The next one is the Mahavir Chakra. To be the recipient of two of them is I am totally overwhelmed by the way the country has bestowed this great honor on me. मैं ये कहना मांगता हूँ कि ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं उसके लिए देयर इज़ ए एलिमेंट ऑफ लक। यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और ये मेरी कुछ किस्मती थी। इट वाज माय गुड फॉर्च्यून दैट आई वाज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। 1965 मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धामध्ये विंग कमांडर जगमोहन नाथवर अशीच कामगिरी होती कि मैं ऐसी जगह था जहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और वो है मैं कैनबरा हवाई जहाज़ चलाता था। और कैनबरा जहाज़ जो है उसके 3 वर्जन होते हैं।
एक सबसे बड़ा वर्जन उसका बॉम्बिंग का है, जैसे मीडियम एरोप्लेन फॉर बॉम्बिंग, और उसके दूसरा है इंटरडिक्शन, जिससे ज़मीन के ऊपर गोलियां चलाते हैं और ट्रक्स और रेलवे ट्रेन वगैरह के ऊपर, यू कैन डू कॉल इंटरडिक्शन. एंड थर्ड वन इज़ द एरियल फोटो रिकॉनेसेंस, एंड my job was for reconnaissance only, and I was on the Canberra aeroplane for 11 years, 1957 से लेके 1968 तक. ये आज तक is a very unusual occurrence for anywhere in the world for somebody to be on one aeroplane for such a long time, particularly in the armed services. वजह उसकी ये थी कि जो भी काम मेरे से हुआ है तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम इसी जहाज़ के ऊपर चल रहो. तो मैं 106 SR स्क्वाड्रन, 106 स्ट्रेटेजिक रिकॉनेंस स्क्वाड्रन में मेरी पोस्टिंग हुई 1 जनवरी 1960 में, और उसके बाद में कोई ज़्यादा रिकॉनेंसेंस नहीं की क्योंकि कुछ ज़्यादा तमाशा नहीं था. सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान के साथ में हमेशा गड़बड़ रहती थी क्योंकि वो कश्मीर के ऊपर लगे हुए थे, और मैं जाता था और तस्वीरें खींचता था जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के परली तरफ पाकिस्तान के ऊपर भी, और जो ज़रूरी था कि भी ऐसा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिले कि अपना आर्मी जो है वो they can be prepared. The army must know what they're going to face at the other end. So wherever there was a threat developing anywhere down the line, so yours truly was called to take aerial photographs. And the cameras which were used were telephoto cameras, और उनकी इतनी there were such high class cameras कि अगर आप 40,000 फुट के ऊपर हो और वहाँ से तस्वीर खींचो, टेलीफोटो कैमरा विल पिक अप ए कार एंड द नंबर प्लेट यू कुड रीड. तो इतने इस किस्म के हमारे साथ तो उनके रिकॉनेसेंस के कैमरा थे. तो लेकिन ऐसा था कि अगर जब हम बहुत बुलंदी पे ऊपर जाते हैं, if you fly at a great height, say somewhere about 50,000 feet or some feet, तो वहाँ पर उनके जो जहाज़ थे ना, सेबर जहाज़, उनको चलने में मुश्किल था. लेकिन उनके बाद में फिर 104 भी आ गया पाकिस्तान के पास में, तो वो ऊंचाई में जा सकते थे. तो अब इसका एक ही तरीका था कि बजाय इतना ऊंचाई पर चलाएँ हवाई जहाज़ को, मैं डेक लेवल में जाता था. तो मेरी फ़्लाइट जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर हुई है, ये और ऑल्सो इन तिब्बत और चाइना के अगेंस्ट 1962 में, वो डेक लेवल में थी. डेक लेवल मीन्स कि 100 फुट की बुलंदी के ऊपर, जितने ट्री टॉप हाइट है उस हाइट पे मैं फ्लाई करता था. और उस कैमरा से जैसे पोर्ट्रेट मेरी खींचते थे, उनकी पोर्ट्रेट लेता था मैं उनकी. तो वो काफ़ी बहुत सा मटेरियल उसमें आया था 1962 में. एंड आई वाज एट दैट टाइम इन्वॉल्व इन डूइंग एरियल फोटोग्राफी, मीन्स ओनली फ्लाइंग एट वेरी डेक लेवल. एंड मैं सारा अक्साई चिन में आई स्पेंड 3 घंटे 4 घंटे में उनके ऊपर अक्साई चिन में फ्लाई किया. और वो इस हाइट से तो आदमी की शक्ल भी नज़र आ जाती है. तो उनके सोल्जर्स मेरे ऊपर फायर करते थे अपनी राइफल्स वगैरह से, बट स्मॉल आर्म से यू कांट ब्रिंग एन एरोप्लेन डाउन. तो वो मैं बच गया वहाँ से. लेकिन उन फ्लाइट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, और इतना था कि ये पूरा इस्टेब्लिश हो गया था कि उनकी एयरफोर्स है ही नहीं. क्योंकि अगर 3-4 घंटे आप उनके ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो उनको काफ़ी टाइम है आपके अपोजिशन करने के लिए. सो दैट for me to have been flying over the sensitive areas. भारताने नेहमीच शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण तरीसुद्धा सीमेवर धुमश्चक्री चालूच राहते. 1962 साली चीनशी आणि 1965 आणि 71 साली पाकिस्तानशी युद्धात
भारतीय सेनेने एकदम उल्लेखनीय आणि धाडसाने कामगिरी केली. त्यावेळी स्क्वॉड्रन लीडरची भूमिका बजावणारे विंग कमांडर जगमोहन नाथ यांनी 62च्या चीनी युद्धामध्ये एकदम चातुर्याने आपली कामगिरी बजावली. बट 1962 में बिकॉज मैं पहला आदमी था कि लड़ाई होने से पहले भी मैं रिकॉनेसेंस कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि मैं जैसे आपसे बताया कि वेन एवर ए थ्रेट डेवलप्स एनीवेयर you have to get the information from the opposite side. So I was involved before the 1962 war कि the पहला महावीर चक्र जो मुझे मिला है is dated 1st January 1962, and in fact the war actually started in October में स्टार्ट हुई थी. तो ये सारा मामला उस वक्त स्टार्ट हुआ, and when they gave me the महावीर चक्र in January 1963 में, so they dated it with effect from 1st January because I was busy from that time onwards. तो ये मेरा पहला महावीर चक्र था. अब उसके बाद मैं लगा रहा काफ़ी साल इस काम में, and also my unit was involved in aerial photographic survey for updating the country's maps, and that was another major assignment, and the unit had done aerial photographic survey of the whole country from one end to another on 3 times to update the maps over the years. So that was the work which we were doing in peacetime as well, apart from doing reconnaissance against the potential enemies. So the second महावीर चक्र, उसके बाद में एक वो भी हुआ था. तो उसके बाद में फिर 1965 का था. The problem with Goa was before the 62 now, I think. I can't remember the actual dates now, but 1965 mein, when we started, I was the first person to receive the Mahavir Chakra for 1965, first person in the armed services, and that was the 1st September 1965. और उसकी भी एक कहानी है, मैं अभी वो आपको बताता हूँ अभी कैसे हुआ ये. तो 1st September से मुझे मिला, and because I already had I was the first person for having got the first MBC, वो जो second मिला, तो I became the first one with the double Mahavir Chakra as well, and the next person to get the second Mahavir Chakra was General Sparrow. So हम 2 जन थे almost till 71, and 71 में फिर बहुत से ऐसे ऑफिसर थे आर्मी से जिन्होंने पहले काम किया था in 65. तो 71 में फिर there were 5 more people. So total number of people in the country to date who had the 2 Mahavir Chakras are 6 people. So out of 6 people, 5 have set course. So I am the only living one at this time of mine. So I have the good fortune of having had a chat with you at this time. तो 1st September का ऐसा था कि हमारे कन्फ्रंटेशन थी पाकिस्तान के अगेंस्ट. They tried to send their soldiers dressed as Kashmiris into Kashmir, and thinking that the local people will join them. General Malik was the other one there, and वो पूरा फेल हो गया. तो अब उनके पास में और कोई तरीका नहीं था. They said what we do is we start another operation called Operation Grand Slam, and that was that they will start some problem with their artillery and their tanks near Jammu and Jammu side. So Pathankot से हमारे जो जहाज़ थे उस वक़्त, so they launched an aeroplane called the Vampires. Vampire is a very elementary first jet aeroplane which India had, and they destroyed numerous tanks they destroyed, and the Pakistani they were going back for a while. इतनी मुश्किल उनकी थी. The problem with they were having Chamjori and Akhnur. They felt that the best thing would be that we start a second front on our own in the south of that area, and वहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर के पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान में एक इच्छोगिल कैनाल है. So that is supposed to be some kind of a defensive barrier in case there is an operation there, and that is a very fortified area.
तो कैनाल के ऊपर भी काफ़ी there are quite a lot of guns there, and also they have got quite a lot of defensive equipment and people there. So they now wanting to start the second plant, and the question was where to start. To start, it would be where the weakest point. To establish the weakest point, the only way you could do is by doing aerial photographic reconnaissance and seeing कि भी इतना यहाँ पर है, इतना यहाँ पर है, and so on, and then accordingly you decide. So उस वक्त they decided to only after I took the photographs. When the army was wanting to open a second front, where to check the area, I was called for it. और अगर वो if the Pakistan Air Force comes up to get you down, then we will have 2 MiGs aeroplanes we will send from here, and they will protect you. So I said, well, that's good, but they will not cross the border because the war has not properly started. The radar station near Amritsar called the 230 SU. So the 230 SU, the commanding officer is a fellow called Wing Commander Dandapani, very close friend of mine. तो उससे पहले मेरा हमेशा contact होता था whenever I used to go into Pakistan earlier. Now they were not informed this. They were not informed that I am going to be launched into this area in Pakistan itself, and they are looking right into the radar and they are seeing exactly what is happening at the other end. So I went on that flight. I flew over Ichagal Canal. When I went in, and my normal technique used to be, मैं काफ़ी digress कर रहा हूँ देखिए, my normal route used to be that I had to go deck level ताकि वो उनका radar मुझे पिकअप नहीं करता. तो जब मैं टारगेट के नज़दीक पहुँचता था, I had to accelerate maximum speed, and I used to convert that speed into height. So I had to go up to about 12,000 feet, and I used to start taking pictures at that point. And I would be exposed only for a period of about, I would say, maximum 10 minutes, and then I would dive down again and again come deck level. So I was exposed only for hardly 10 minutes maximum, and that is enough for me to be safe and come back without any difficulty. So that is what happened, and I was never shot down. When I was coming back, their 4 sabers got up, and the way we knew about it was that the Canberra has a tail radar. The tail radar is giving you the information behind you. So कोई जहाज वहाँ से पीछे आता है, it comes like a blip and tells you exactly where it is located. So my navigator, the fellow who was taking the pictures, a fellow called Relka, so as soon as the first blip comes, so you get a horn, so sound, and he got back quickly into chair and he said, sir, I can see on the screen there is one blip, and it's just coming in, it is moving up. And then he says, so there is another one, and another, and another. There were 4 blips turned up, and they were all heading towards trying to get me down. Now the sabers had what they call a missile, air-to-air missiles called sidewinders. These are heat-seeking missiles. So what happens is that you get behind the aeroplane, you're going to shoot down, and the missile itself will sense the heat, and once it senses the heat in sufficient amount, so it takes at least about almost 5 to 10 seconds for it to lock on. But in the meanwhile, if the other target aeroplane moves about a bit, then they have to do the exercise again. For the main way to escape that was to start doing turns there and so on. So you are not at one place, and they cannot shoot you down because they don't have the time to lock on. So what I did was I improvised, and I did some kind of an aerobatic on a Canberra aeroplane, which is not like a fighter, it is not meant to do the aerobatics. So the aerobatic was called the barrel roll. The barrel roll is like this on a point like that,
the aeroplane rolls like that, and then this is the way it will do a loop. So if you were to combine the two, then you will be doing this and moving forward as well. So it's called the barrel roll. So I was doing a turn and a roll together in the form of a barrel roll, and I started heading towards towards our border. Then I started heading doing barrel rolls, and their sabers couldn't lock on their missiles onto me. In the meanwhile, I was about to cross our border into own side, so all these sabers peeled off. They went away, and then all the blips disappeared. And I started heading towards Pathankot itself. In fact, I was supposed to go to Palam all the way and offload the cameras, and they take they process the pictures and so on and handle it there itself in a matter of a few hours like that. I was very short on fuel. Almost tanks were showing zero fuel. There was very little fuel, and at that point of time I thought I will go and land back into Pathankot instead of going to Palam. So as I was heading towards this thing, and again there was a horn, and then the blip appeared again. 2 or 3 blips were again on, and I knew that I was now over our own country. I don't need to do any barrel rolls. I just kept turning around, very tight turns. And guess what? There were 3 of our own aeroplanes trying to shoot me down, because they thought, having come from Pakistan all the way, that I was a Pakistan Air Force guy. And then they saw the Indian marking there, and then they talked to the air traffic control for Pathankot, and they said, yes, this is our own aeroplane. And at that time I was hardly any fuel, and I had to land in Pathankot, and the air traffic control tells me, he says, you will have to wait for at least 10 minutes, because our aeroplane which are coming back from Chamjori, Akhnur, they're all landing back now. So I said, there is no way I can do that. So 2 aeroplanes were coming in, one behind another. They would have landed. I cut in between, and I landed. And just when I was about to get into my dispersal area, one engine conked out because of fuel transfer. So that was the closest I came. So they allocated the date for my second Mahavir Chakra on that day. So that is the story of the second Mahavir Chakra. Well, I think where the gallantry awards are concerned, as I mentioned before, one has to be lucky to be in the right place at the right time. And anybody who has the opportunity amongst the armed services, you would have numerous people with the double Mahavir Chakras. There's no big deal. लष्कर, नौदल, हवाई दल या तिन्ही दलांच्या जवानांचे बलिदान आणि जागरूकता याच्यामुळे आज आपला देश सुरक्षित आहे. कित्येक महिने वर्ष हे जवान आपल्या घरादारापासून दूर राहतात आणि आपल्या देशाची रक्षा करतात. जणू यांच्या दमणातनं देशभक्तीचं प्रेम सळसळतंय आणि सतत वाहत राहतंय. अशा या वीर जवानांना लक्ष लक्ष मानाचा मुजरा. जय हिंद. सैनिकांविषयी आपल्याला सगळ्यांना अतिशय अभिमान वाटतो. अगदी शाळकरी मुलांना सुद्धा अभिमान वाटतो. शाळेमध्ये आम्ही कविता शिकलो. 5वी-6वीची कविता असेल, नामवीरा. आणि त्यावेळेसपासून सैनिकांविषयी जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपण भारावून जातो. कारण आपल्याला माहिती आहे की त्यांचं आयुष्य कसं आहे. त्यांचं आयुष्य अतिशय खडतर आहे. घरापासून दूर राहावं लागतं, खाण्यापिण्याची गैरसोय होते, तरीही ते आपल्या देशासाठी म्हणून आपले प्राण पणाला लावतात. खरोखरच अभिमान वाटतो आणि गर्व वाटतो की ते आमच्यासाठी रक्ताचं पाणी करून, स्वतःचं प्राणार्पण करून ते देश आमचा सुरक्षित ठेवतात. म्हणून आम्ही सुखरूप आहोत आणि सुखी आहोत. नाहीतर म्हणजे आमच्यासाठी ते एवढे कष्ट करतात. स्वतःचं कुटुंब त्याचासुद्धा त्याग करावा लागतो प्रसंगी त्यांना. ते स्वतःचं सुख, त्याग सगळं अर्पण करून देशासाठी लढत असतात आणि म्हणूनच आम्ही सुरक्षित आहोत. मेरे पिताजी ने भी अंग्रेज़ों के कोड़े खाए और उन अलीपुर सेंट्रल जेल में किस तरीके से यातनाएं उन्होंने सही इस देश की आज़ादी के लिए, और आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसका कारण है कि हमारे देश के सैनिक अपने प्राणों की आहुति लगाकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं. उनका मान, उनका सम्मान,
उनकी सेवा का हमें सम्मान करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। हम यहाँ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो -डिग्री सेंटीग्रेड में भी जाकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे वीर सेनानियों को हमें बचपन में वीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ाया जाता था, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के 3 अजेय पैटर्न टैंक को अकेले तोड़ा था। उनको परमवीर चक्र मिला था। उनकी शिक्षा के बारे में बताई जाती थी कि पेड़ पर चिड़िए के लिए निशाना लगाना था तो उन्होंने अंधेरे में निशाना लगाया था। ऐसे सेनानियों की शिक्षा दीक्षा, ऐसे सेनानियों के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभूमि के प्रति लोगों के अंदर प्रेरणा जगानी चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से पूरे देशवासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि अपने देश के सेनानियों को कहीं भी आप देखें तो उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे देश में जो सैनिक हैं वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तभी हम लोग इधर अच्छे से रह पा रहे हैं। अगर वो ना हो तो हमें कैसे रह पाएंगे। मीन्स हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी यहाँ कुछ करें, हमारे देश के लिए कुछ अलग करें। वो उधर उतना मेहनत कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े रह के दिन रात उधर खड़े हैं, और हम इधर इसलिए आराम से जी पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ, डेली रूटीन अपना इतना आराम से चल रहा है। उनके लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि घर से कोई तो कोई बॉर्डर में या सोल्जर में, मिलिट्री में जॉईन होए। आपल्या सैनिकांना खूप सारं धन्यवाद करते का, तर ते आपल्यासाठी खूप सारे लढतात आणि आपल्याला जीव धोक्यात देऊन आपली सुरक्षा करतात। त्यासाठी मी त्यांना खूप खूप सॅल्यूट करते। अभी 26 जनवरी आ रही है और हम लोग इस दिन पे सैनिकों को याद करते हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक भारतीय हूँ।